Okay, so we'll start now. Okay, so I think in last class yesterday we were trying to run this kind of command, right? Like function. सबने join किया? On कर लो. Everyone please. ठीक है, अगर आएगा तो ठीक है, otherwise we'll continue. Okay, so I'm saying select the staff or employees where first name is like some character. Let's run this and see what happens. So if you notice, we are getting the count as around 2000, 1999. So all the names which are starting with these three, you are getting all the names which are starting with PRA, right? Write a comment over here. All the names which start with PRA, which start with PRA.
ओके, सबको आ रहा है, आउटपुट आ रहा है? What is a like function? Very simple. Like, as the English name suggests, it will do your pattern matching. Basically, it is like is for pattern matching. Like is for your pattern. If I write my code in a little different way, if I say something like this, select staff employees where first name is like PRA. What will this last line do? ये last line क्या करेगी? All the names which are ending with PRA. So probably there is no name ending with, let's say, PRA. Okay. Which end with PRA. Okay, so all the names which are ending with NAV, so सारे के सारे प्रणव आ गए. कुछ और नाम बताओ. Let me say EP.
Okay, guys, everyone, please have a look at the last line. So what will this last line do? So please एक मिनट बात नहीं करो पीछे. Select a staff from employees where first name like. So do you notice the difference between your percentage and your underscore? When I'm giving underscore, do you notice it is selecting only those names which are 4 digits, or I'll say 4 character, because I'm giving underscore. So Mary, Mark, all the names, if you see, they are of length 4. Let's say if I give one more underscore, let's see what happens. I get the names which are of length 5. If you give percentage, then there won't be any restriction of length. If you give underscore, it would be a restriction of length. ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? So write it. All names which start with MAR and are of length 4 and are of length 4. Similarly, try with 5, try with 6. Give 2 underscore, give 3 underscores. Let me see लोग करते हैं.
Okay, let's see the last line. What is last line doing? Can someone tell me? After seeing the code and after seeing the output. देखो. So first name, and I'm saying, instead of like, I'm saying not like. Not like. So it means it is like you're not equal to. It will select all the names which do not satisfy this condition, right? Which do not start with PRA. It will select all the names which do not start with PRA. Please practice करो, थोड़ा सा speed बढ़ाओ so that I can also increase the speed. Okay.
थैंक यू। इट मीन्स एक लड़का तो है जो ध्यान से देख रहा है। ओके, नाउ Ubaid and Vedant, go on mute. कौन है? वेदांत कौन है? Vedant, go on mute. Okay. So select a star for employees where limit 5 I have said. So for example, let's say birth date. So many a times I am not interested in the full birth date. Let's say I'm interested only in the year part. I want to extract only the year. So what can I do? So the birth date starting is year, then it is your probably it is month, and then it is your day of the month. So what I can do is I can use my, so basically from a large string, we want to capture a small portion of string. Okay. So the large string is your year, month, and day. And what I want to capture is only the year part. So what I can do is I can say select substring SUB STR, and I'll say birth date. And I'll say 1,4. So 1,4 from employees. Okay. Select substring birth date 1,4 from employees. Let's see what happens. Function substring. So unknown function, unknown column birth date. I think birth date की spelling गलत है. Okay. So can you notice it is fetching only the year part. Now how it is working? So do you notice I am giving 1,4. It will start from position number 1 and the length is 4. So starting position and length. Okay. So for example, if I give 1,6, अब देखते हैं क्या होता है. Do you notice? So it is selecting the, so length is your 6. Can you notice the length is 6? 1953-0. So length becomes 6 and starting position is obviously 1. Now let's do one thing. For better understanding, let's take one more example. Let's say I want to extract only the month part. So मेरा numbers क्या आने चाहिए? If I want to extract only the month part. 7. Let's say 5, let's see whether 5,2 will work. Okay? Let's see. So 5,2 is not working. I think इसने ये हाइफन क्यों सेलेक्ट किया? एक सेकंड चेक करना पड़ेगा. सर वो 5 नंबर पे हाइफन ही. 5 पे हाइफन है, राइट? हाँ, तो 6 जाना चाहिए, राइट? 6,2 करेक्ट. 6,2 starting position would be 6 only, right? तो पूरा सिलेक्ट नहीं किया. ठीक है, मंथ सेलेक्ट हो जाता है. अगेन लेट्स हैव अ लुक, लेट्स रिविजिट दिस पार्ट. फिर से देखते हैं. सो मंथ पार्ट, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ओवर हियर द स्टार्ट द पोजीशन ऑफ 0 इज योर 5th ओनली. 5th है, 6th हो जाएगा. 1 2 3 4 5 and 6. It would be 6th position if you count it from 1. So 1 2 3 4 5 and 6. So starting from 6 and length is
2. बेसिकली जीरो इसलिए निकल रहा है बिकॉज 99% ऑफ टाइम आई एम वर्किंग पाइथन, वहां पे काउंटिंग जीरो से चालू होती है. ठीक है. सो starting position count, what is the position of this zero? Position of this zero is 6 if you start the counting from 1, and this 2 is your length. Okay, now please give a try. So this will select your month, and let's write one more piece of code which will select a year. So year ke liye kya kar rahe hain? 1 starting position and 4 is the length. So this will select our year part. ठीक है, this will select our year part. ठीक है. Which one? देखो, let's forget about what we have done. पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, डेटा अपना देखो क्या है. ठीक है, and try answering few questions and you will understand. So can you see the column birth date? So in birth date, which is the first thing? Is it year, month or day? It is year. Okay. So if I start counting from 1, so let's say the birth date 1953, the 1 of 1953 will start from position 1. 1953 का लेंथ कितनी है? लेंथ 4 है. 1953. There are 4 digits. So 4 digits are there. So what I'm doing is I'm saying select substring. So substring, let's bring it over here. Select substring. Substring, what is birth date is the name of the column. 1 is your starting position. And 4 is the length. So length of year kitni? Length of year 4 hai, 1953. So 4 is your length and 1 is your starting position. अगर तुम्हें कोई भी चीज सेलेक्ट करनी तो कैसे सेलेक्ट करोगे? भूल जाओ ये. कोई भी चीज सेलेक्ट करनी तो कैसे सेलेक्ट करोगे? कहीं से स्टार्ट करोगे, कहीं पे एंड करोगे. बराबर. तो वही सेम चीज यहाँ पे करिए. सपोज करो तुम्हें एक लाइन भी ड्रॉ करनी, तो 2 पॉइंट दोगे, एक स्टार्टिंग का और एक एंड का दोगे, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट दे दो और लाइन की लेंथ दे दो. बराबर. तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया और उसका लेंथ दे दिया. ठीक है, नॉर्मली सॉफ्टवेयर ऐसे ही काम करेंगे. लिमिट 5 कहाँ लगाया? वो तो रिकॉर्ड सेलेक्ट करने के लिए लगाया ऊपर. उसका नीचे वाली लाइन से क्या कनेक्शन है? ये लाइन नंबर 272 तो जस्ट तुम्हें डेटा दिखाने के लिए कि डेटा कैसा है. सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता तो वो अंडरस्कोर भी सेलेक्ट हो जाएगा. जो 1953 के बाद एक अंडरस्कोर है ना, दैट विल आल्सो गेट सिलेक्टेड. स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी लेंथ कितनी बस. एट एंडिंग इट इज अंडरस्कोर और हमने 5 दिया तो 4 डिजिट्स हमारे ईयर के और एक अंडरस्कोर आ गया. ठीक है, बट आई डोंट वांट अंडरस्कोर, आई ओनली वांट द ईयर फर्स्ट. कहां? सब स्ट्रिंग इज अ फंक्शन ना. इट इज अ फंक्शन. सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा? सब मींस अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग. सेलेक्ट अ सब पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है.
ओके अब एक पहली एक्सरसाइज मैं तुम लोग को देने जा रहा हूँ। अब तक तुम लोग को कुछ करने के लिए नहीं बोला मैंने, एक छोटी सी चीज करके दिखा, ठीक है? आई विल जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड आई गिव यू सम टाइम, यूज योर ब्रेन। Everyone run this line. Select staff from employees, limit 5, limit 10, whatever. ये डेटा अपने सामने ओपन करो and I'll put the question from the same thing. Done? Okay, I'll write the question or requirement. Question. Find the age of the employee in years. And mark my word, I'm just saying years. Neither month, neither date. Find the age of the employee in years when he joined the company. When he joined the company. Possible है? Possible तो खैर है, ठीक है? So focus only on the year part. जिसने सबसे पहले यस बोला था, क्या उसकी तरफ से टाइम आ सकता है? कितना टाइम चाहिए? लीडर कितना टाइम? 10 मिनट्स। वापस रिपीट नहीं करना, पढ़ो, वहां पे लिखा है। सपोज करो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट देके चला गया, अभी पढ़ो उसे। जब मैं कोई क्वेश्चन दूंगा तो उसे अटेम्प्ट करना है, बाद में मैं उसे डिस्कस करूंगा इन लेंथ। पहले अपना ब्रेन लगाना है।
डन. जिसका हो जाएगा he will let me know. I'll have a look. So select substring hire date 1,4 from employees. This will not give you an age. Age थोड़ी ना देगा. वो तो ये बता रहा है कि किस ईयर में तुमने ज्वाइन किया है. तुमने 21 साल में ज्वाइन किया है या 25 साल में ज्वाइन किया है, वो चाहिए मेरे को. एज पता है? किसी की एज कैसे निकालते हो? उसके बर्थ डेट से माइनस करते हो, बर्थ डेट का यूज करते हो. यूज दैट. आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा हटके है. बहुतों ने तो एसक्यूएल पहले अटेंड किया हुआ है, जरा करके दिखाओ. Vedant, go on mute. Let me mute him. So I will give you one hint. कैसे करोगे? अब सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो. Employees column में are there in employees table? Can you notice that there are two columns, birth date and hire date? If you subtract birth date from hire date, you will get the age. You can find the year of the birth date using your substring. You can find the year of your hire date. माइनस कर दो और एज आ जाएगी. माइनस का सिंबल तो पता ही है ना. माइनस का सिंबल जो नॉर्मल होता है, जो बचपन से यूज कर रहे हो. यूज द सेम माइनस सिंबल. माइनस इट एंड यू विल गेट इट. जिसने किया उससे मुश्किल है.
उसके लिए नहीं मुश्किल है. Okay, let's take it up. So I'll quickly say this thing and then probably let's write. So I'll say select, let me select the birth date also. Birth date, hire date, and then I'll say substring birth date and substring hire date. Hire date. Actually, hire date यहाँ आ जानी चाहिए and substring वहाँ चला जाना चाहिए. And let's put it in one bracket. From employees. And I think this should work. Employees hire date. Hire date doesn't exist. HIRE, hire date, substring birth date. ऐसा क्यों बोला? Employees hire date does not exist. क्या लेंथ गलत दिया? Select. I think this comma will come. Now, everyone please have a look. So only problem was I was missing this comma. So can you notice birth date, hire date, and you have your age. अब एक second ध्यान से देखो. For example, if I remove this part, ये part तो already clear है. You guys are comfortable. Now, if I select only this part, you are already comfortable. If I select only the substring birth date, you are already comfortable. Now, this is acting as your one column. This is acting as your one column. Can you notice one more column appearing? Which is nothing but, so from substring hire date, you will select the year. And from that, you will minus your birth date. Okay. As of now, can you notice the name of the column is, doesn't make much sense. It is substring hire date. So what I can do is I can say as, let's say employee underscore age. Okay. Let's beautify it if we can. Let me do one thing. Hire date and let me say something like this. If I run this thing, you will get your employee age. So basically there is a new column which is coming and the name of that new column is employee age. ठीक है? अगर तुम्हें देखना है तुम्हारे एम्प्लॉय की एज कितनी है, उसको हटाना है, निकालना है, प्रमोशन देना है, तो उसके काम आएगा ये.
Okay, so I think Siddharth has also given me the right answer. No, but Siddharth का answer सही नहीं है. I was interested only in the year part. सिर्फ एज आना चाहिए, तो सिद्धार्थ वाला एज नहीं है. Okay, let's take one more example. Find the current age of the employees. Find the current age. तुमने भेजा? Select substring, higher date this minus substring. ठीक है. That is also if you want to see only the top 10. है? इसमें सिर्फ एज आएगा. Yes. तो इसमें भी वही सेम चीज तो मैंने भी करी हुई ना. अरे बाबा थांबा. सी मैंने बर्थ डेट एंड हायर डेट इसलिए डाला बिकॉज मुझे तुम लोग को समझाना है. ठीक है. अगर ये चीज नहीं डालोगे तो वो चीज नहीं आएगी. ठीक है ना. दैट इज ऑब्वियस. ठीक है. अगर मैं ये दोनों कॉलम नहीं देता तो तुम लोग बोलते कि एज 33 है कि नहीं. ठीक है. क्या as is, if you want you can even remove as, it will still work. Suppose करो if I remove as, it will still work. ठीक है. So adding your as is not compulsory. And तुम बोल रहे हो as is. I don't know whether as is will work. Let's see whether as is. I don't think it will work. Error आता हुआ दिख रहा है. ठीक है. Guys, एक सेकंड वापस सब लोग ध्यान से सुनो. Whether you add this word as or whether you don't add this word as, it will still give the same result. It will still give the same result. Now, please start working on this thing. Find the current age of the employees. Current age of the employees कैसे निकालोगे? आज की डेट से बर्थ डेट को माइनस कर दो. आज की डेट कैसे देखोगे? You can use your sys date. Select system date. So वो आज की डेट तुम्हें बता देगा. आज की डेट यही है 22/06/18 and it is 9:40:57 second. ठीक है. So इसके आगे कमेंट लिख लो. Many a times you may need this system date. Gives today's date and time. The better word would be date and time format. Or date and time stamp basically. I'll say date and time stamp. Use this thing to find the current age of the employees. हो गया? बिल्कुल हो जाएगा. उसमें भी सेम चीज ही करनी है. इस बार सब लोग अपनी क्वेरी लिख के दिखाओ. चैट विंडो पे डालो प्लीज. हैं?
So what should be my query? So I can see many people have done it. So what I'll do, I'll copy this thing. Substring ये यहाँ बंद हो गया. एक कुछ तो ब्रैकेट गड़बड़ जा रहा है. नहीं, वहां पे हैश लिखना कोई जरूरी नहीं है. I think यहाँ पे ये जाएगा. Substring substitute. Select birth date, hire date. एक सेकंड. इसने क्या बोला? Operand should contain columns. Minus substring ये तो सही है. नहीं, हायर डेट अगर यहाँ पे दिया तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सिस्टम डेट में मैंने क्या डाला है? ये ब्रैकेट शायद ये शायद एक्स्ट्रा आ गया था. अभी आ जाएगा. ओके. So over here I don't need the hire date. It is extra information. Don't need that. Okay. It is the extra information. Okay. So birth date. And basically if you want, you can also say system date, the birth date and employee age. ठीक है. Okay. So we have started with a like, not like, and then we have seen a substring part. Now let's see our between. Let's see our between. So what will between do?
Between, as the name suggests, it will select between two given range. It will select between two given range. It will select between two given range. Let me say my requirement is HR wants to know how many people were hired in a given year. How many people were hired in a given year? Let's say, take some year, let's say 1991. 1991 में कितने लोग हायर हुए थे, तो कैसे पता लगेगा? Okay, so there can be multiple ways also, but I can use between function also. I can use between function. Okay, so I can say select the star from employees where hire date is between, let me say 1991 0101 and 1991 12/31. So this, your year will start from 1st Jan and it will go till your 31st of December. So 12 means December and 31st is your last. So let's see how many people were hired. And focus on the hire date. You will not see any date which is not part of 1991. So how many people were hired? 22,568. हायर डेट को ध्यान से देखो, क्या उसमें कोई भी ऐसा डेटा दिखता है जो 1991 का ना हो? सारे एम्प्लॉइज 1991 के आएंगे, ठीक है ना? बिकॉज आई हैव सेड between 1991 01, so 01 is your Jan month and 01 is your 1st of Jan till 31st of December. Okay, so this is the usage of between. Write the problem statement and then write your code.
अच्छा, before we move ahead, any doubt, any questions till this point, guys? सारी चीजें clear है? Like, between, not like, underscore, percentage. Okay. Now let's enter into some different thing. Aggregate functions. ठीक है? So aggregate functions. So guys, आप सब लोग please 2 मिनट शांत हो. Aggregate functions, basically where we would be using are some mathematical formulas. Mathematical formulas, I'll not say formulas, but numbers. So example can be your count, maximum, minimum, average, all these things. It can be your sum also. It can be your, you are doing a kind of round off. All these things are part of your aggregate. Okay, so aggregate functions. So let's do one thing. If I say select star from, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं. Be ready, because things are very obvious. Select a star from salaries. Let me say limit something as 10 or whatever. Okay, so do you notice a salary column? You notice a salary column. Let me say I want to find maximum salary. So what I can do? I can just say select max salary from salaries. SALARIES. Select max salary from the salaries. So it will give you the maximum salary. Similarly, if I want to find the minimum, I hope people have guessed it. इसका ठीक उल्टा कर देंगे. Select min salary, right? Min salary from salaries. Select minimum salary from the salaries. So difference काफी है. 38,000 and 1,50,000. फिर भी उतना ज्यादा नहीं है. 5 times का है. इतना तो हो गई. If I want to have the average salary, select AVG salary from salaries. So salaries is the name of the table and salary is the name of your column. So it will give you the average salary. Average salary is 63761.2043. Any doubt, any questions, guys?
So maximum, minimum, average. The name of the function itself is explanatory. Max salary, min salary, average salary, whatever. ठीक है. अच्छा. Now everyone please focus on the last line. Do you notice the average salary is coming in 4 digits after decimal? दिख रहा है 0.2043. So what I can do is, if you want, I can do a round off. So हम इसे round off कर सकते हैं. Round off कैसे करेंगे? You can just use your round function. ठीक है? Let me say round. Now it will round it off. Do you notice? It has rounded off. Suppose if you do not want the exact round off, but you want some answer in few things after decimal. So this will give you 2 digits after decimal. Can you notice? I have given comma 2. Whenever you are talking in terms of dollar or rupees, हमेशा 2 digit decimal. Rupees, paisa, dollar, cent. The third digit doesn't make any sense. Okay. So average is the function. So after doing your average, it will do your round off. It will do your round off. Select round average salary, comma 2. So it will select 2 digits after your decimal from the salaries. So round off is to round the values after decimal. Okay. Let's see one more thing. Let's explore a sum function also. So if I want the sum of all the salaries, so I can just say sum from salaries. And the meaning of sum is same the way it is in mathematics. Sum means addition, summation. इतनी सारी सैलरी पे हुई है इतने सालों. Done. Have I used the distinct function? मैंने बताया. Yes. बताया कहाँ बताया? Let me see. अच्छा.
So I have used this distinct function. Let me bring it down again. The last person. Tell me what will this last line do? ये last line क्या करेगी? क्या लगता है? What will this do? First name which is distinct and unique. What do you mean by distinct and unique? So what do you think? How many output would I get? मुझे 2 output आएंगे, 5 आएंगे, कितने आएंगे? So I will get the count of all the distinct names. Okay. So there are 1,275 unique names. Okay. No, it means there are only 1 to 5% with unique name. बाकी सारे नाम repeat हो रहे हैं. ठीक है. So do you notice distinct? Suppose करो if I copy this line and put it something like this. Okay. And let me remove this count word. And let me also remove this thing. So if I say select distinct first name, now see the output. Do you notice? None of the names are being repeated. कोई नाम तुम्हें repeat होता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. ठीक है? And still if you notice it is 1,275. So over here it is giving the list of 1,275 names. And previously it was giving only this 1,275 as a count. ठीक है? 1,275 as a count. No. अब एक छोटा सा और. So if I want to find, I think ये भी हमने किया था ना? How many males, how many females are there? ऐसा करा है? करा है? So how did we do? I said select count star from employees where gender is equal to male or where gender equal to female. So if I run this line, let me copy this and put it over here. So it gives me information only about the gender male. But if I want the information for both of them, for male also and for female also, तब क्या कर सकते हैं? Column name. नहीं, see, वो तो मुझे भी पता है कि that you can give F over here, उससे फीमेल निकल आएगा. But I am saying कि अगर हमें दोनों का काउंट चाहिए, सम कर सकते. सम कुछ ग्रुप बाय से कभी सुना है? जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनसे मैं आंसर एक्सपेक्टेड था. सो आई कैन डू अ ग्रुप बाय. एक बार कोशिश करो जिन लोग को आता है एंड देन लेट्स टेक इट अप. ठीक है? मैं भी लिख रहा हूं बट अभी मत देखना. Select gender, count gender from employees.
group by gender. I think this should work. Okay. Everyone, please stop your coding for a second and let's have a look. एक second, सब लोग please stop करो and let's have a look. So if I run the line number 319, what is my output? Line number 319 run करने पे output कितना आया? 179973. Let's write it over here. 179973. And if I run the last line, what do I get? 120051. 120051. ठीक है. Now let me run the last line. Do you notice for male it is giving the same number 179973 and for female it is giving 120051. Okay. अब last line को ध्यान से देखो please. Let's say if I remove this part, can I say this thing is clear to you? Select gender, count gender, form employees. ये चीज तो clear है. We have already been using. Now what I am doing, I am saying group by gender. So it will create the groups based upon the gender. In your gender, you have two columns. I'll not say two columns, but you have two values. One is your male, another is your female. So it is creating your two entries, one for male, another for female, and it is giving you the count. Okay? That is what your group by is. So select gender, count gender from employees, and then you say group by gender. Okay, please go. Done. Understood? Next example है. Okay, try solving this last part. How many times each unique name appears? See, basically, before you start attempting this thing, be very clear with the problem statement. So I'm saying how many times each unique name appears. Okay. So for example, when I run this query, do you notice George and all these names are there? So probably let's say this Mary or Sumanta or Sanya, this name may be appearing more than once. So all 1275 names, they may be appearing more than once. हर नाम कितनी बार आता है? You need to find that. ठीक है? Please give it a try.
Where का where is operation? Heavy रहते हैं वो गेमिंग लैपटॉप उसको राइट तो 1.6 चले इसको मेटल
So, जिसका हो गया, please put your query on the chat window. Let me have a look. किसने रखी है? So select first name, count first name as number of unique group by this thing. So श्याम सिंह कौन है? श्याम सिंह की क्वेरी है. Let's see. First नजर में तो ठीक लग रही. Let's see the output. Select first name, count first name as number of unique first name from employees group by first name. I think this should work. Let's see the output. Okay. So it gives you how many times the name, a particular name is appearing. And for example, what we can do is, let's say this GEORGI is appearing 253 times. What we can do is we can say select first name from employees where first name is equal to GEORGI.
This is just to check कि क्या सही output आया है कि नहीं. This is just a check. So I should get answer as 253. If I run this line, I should get answer as 253. Let's run it and see. Name, first name, count first name कर देना फिर, ठीक है ना? COUNT count first name. ठीक है, so I should get answer as 253. And I get answer as 253. It means the query is working fine. This was just a check. Let's remove this code. It is not needed. This was only for the explanation part. So let's come back over here. So I'm saying select first name, count first name, and this is the name of the new column. Even if you, as of now, let's say you don't give this thing, then also it will work. Okay, from employees, group by first name. Group by first name. So there are 1,275 unique names. So you will get this thing. Okay. And now take your break. लोगों को दे दो क्या ये? Okay. कितनी देर का ब्रेक चाहिए? Okay, let's meet around 10:45.
Okay, so let's get started. Acha, see the last line, guys. Can I say this last line is clear to everyone? कोई doubt, कोई question है तो please अभी raise करो, because we will enter into some more complicated things. कोई doubt, कोई question? Select first name, count first name. So first name and count first name are the two columns which we are getting from the employees and group by first name. So whenever you are using group by, it has to be used after your from. Okay. Now, in this, do you notice that this first name, count first name, the data is not in any order. So basically it is neither in ascending, neither in descending order. So after 253, 228 comes and then 251 comes. So it is just in random order. Okay? So what I can do is, if I want to arrange, let me say, if I have a second problem statement, how many times each name, unique name appears, and arrange them based on count, or you can say based upon the frequency, either ascending or descending, that is your choice. So what I can do is, I'll just take this thing and I'll say group by कर लिया, then I'll say order by. Order by what? Order by, let me say count first name. Okay, let's see what happens. So do you notice, one second. Do you notice now the values are in order? So 185, 185, then 190, 193, 194, whatever. So it has arranged in your ascending order. ठीक है, इसके लिए एक चीज याद रखनी है. The first thing would be, whenever, so over here what I am using, two things. I am using group by also, and I am using order by also. Order by will always come after your group by. इतनी चीज याद रखनी है, and it will always help you. क्या? पहले अगर दोनों यूज कर रहे हो तो पहले ऑर्डर बाय आएगा, बाद में, सॉरी, पहले ग्रुप बाय आएगा, बाद में ऑर्डर बाय आएगा, चाहे कुछ भी हो. ठीक है, एक मिनट इतना करो, एंड देन वी विल सी हाउ टू अरेंज इट इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर.
कुछ चीजें सिंपल याद रखो, पहले फ्रॉम आया, बाद में ग्रुप बाय एंड देन ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का नाम देख रहे हो, ऑर्डर मींस इट विल अरेंज द डेटा इन योर ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो एज ऑफ नाउ इट इज इन विच ऑर्डर, इज इट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर? ये असेंडिंग में, डिसेंडिंग में? असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा जा रहा है, राइट, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो इफ यू सी द, सो Shahab is appearing 295 times, ठीक है। So if I want to arrange it in descending order, then what I can do is DE, just copy this thing, put it over here, and order by, let me say DES, DES या DESC, DESC, order by descending। यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? DES डिस्क्राइब का भी वही, I don't think ये ब्रैकेट आएगा। डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, क्यों प्रॉब्लम दे रहा है? ऑर्डर बाय DESC, आई थिंक यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा DESC, ठीक है। लास्ट में ये पाइथन में शुरू में आता है, पाइथन में DESC करके आता है, ठीक है। तो इधर का कोड हल्का उधर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बट एनीवे, सो DESC स्टैंड्स फॉर योर डिसेंडिंग, सो बड़े से छोटा हो जाएगा, सो फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। इसके आगे कमेंट डाल दो, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके, इस पे प्लीज वर्क करो, गेट द सैलरी डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, विद इन अ मिनट। सब लोग प्लीज लिखो, गेट द सैलरी डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। Get the salaries data in descending order.
Getting? Yes, sir. Okay, so select salary from salaries, order by salaries. Okay. So you are getting the salaries in descending order. Okay. So do you notice one thing, that order by can be done even without your group by? That is why I have taken this example. So ऐसा नहीं सोचना है कि अगर group by नहीं किया तो order by कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? That is why I have taken this example. Otherwise लोगों के मन में doubt आता रहेगा. Hello. Hello. Okay. Everyone stop your coding and let's have a look over here. If I say, सब लोग please एक मिनट stop करो, select count star, or let me not say select count star, but I think हमने ये data already fetch किया हुआ, right? If I go on the top, do you notice that we have generated this data? So in your employees table, how many people you are having? You are having 3,24,000. In your salaries table, you are having 9,67,330. It means in salaries table, so employees table, you would be having everything unique, right? But in salaries table, I may be having a multiple entry of the same employee, because जब salary change होगा, new entry would have been created. ठीक है? New entry would have been created. Keep this thing in mind that in salaries table, you can have a multiple entry for a same employee. Whenever his salary changes, maybe because he changes the department, promotion, whatever, his thing changes. Okay, let's do one thing. Let me say select star from salaries. And let me just put a limit, let's say 10 or whatever. So you are having employment number. You are having a salary. So for example, do you notice the employment number 10,001 is appearing more than once? कई बार आता हुआ दिखता है, right? So now what I want is find the average salary for all the employees, or for all the employment number, for all the, as of now, I'm just saying employees. Okay, find the average salary for all the employees and arrange them in descending order. Before you start doing, तुम्हें लग रहा होगा ये problem is little bigger, but actually it is not. Do you know how to find the average? You know how to find the average? You know how to arrange them in a descending order? You also know how to do the group by. Now only thing is you have to combine all three of them. Okay, please try to find the average salary for all the employees and arrange them in descending order. So basically I want employment number and his average salary and arrange them in descending order. Itna karo please.
किसी ने कर लिया? ठीक है, जब लोग चैट पे अपनी क्यूरी रखेंगे ना तो जस्ट सेंड इट टू मी, अदरवाइज बाकी सब लोग देख लेते हैं, सिर्फ सेंड इट टू मी। ठीक है,
पे ये था कि जायद की पूर्ण स्टेटमेंट याच्यात पण येतो अकाउंट वगैरे ते वापरायचं अकाउंट एवरेज मध्ये पण डबल डबल नहीं नहीं ऑर्डर बाय से सैलरी वो कर तो हर एक एम्प्लॉय का अगर कोने में छुपे रहोगे तो उधर ही छुपे रहोगे, सामने आ जाओ। Select environment number, round average salary from salary to order by salary. Order by salary. ये ऑर्डर हुआ है, देखो। अरे वो नहीं हो गया, अपना डेटा देखो, उसका ऑर्डर फाइल हुआ है, नहीं हुआ ना? ग्रुप के हिसाब से देखो, इसको ऐसे समझो। अगर समझ में नहीं आता तो पूछना था ना, अगर मैं नहीं देखता तो क्या होता? सपोज करो ये गवर्नमेंट नंबर, ठीक है? सपोज करो किसी का आईडी 111 है, किसी का आईडी 121 है, ये 111 की वापस दूसरा प्रमोशन हो गया, ठीक है? फिर से एक बार प्रमोशन हो गया, ये 121 कल से फिर से एक बार प्रमोशन हो गया, पहले इसका सर्विस होगा, इसका सर्विस करते हैं, तो 10 इसका प्रमोशन हो गया 120 हो गया, फिर से 20 हो गया, ये 110 का 140
हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम्प्लॉयमेंट नंबर, कितने एम्प्लॉयज हैं, 2 एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 आ जाए एंड 1 to 1 आ जाए। 1 की एवरेज सैलरी कितनी रहेगी, 100 प्लस 120 प्लस 130 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 3। ये जो वैल्यू आएगी वो इसके सामने आएगी। 121 का एवरेज क्या है, 100 प्लस 140 डिवाइडेड बाय, ये जो नंबर आएगा वो ये आएगा। तो तुमने ग्रुप बाय में एम्प्लॉय क्या, ग्रुप बाय मतलब जैसे भी एम्प्लॉय थे 111 3 बार आ रहा है, ग्रुप बाय करने का उसकी एक एंट्री ऐसी है। एवरेज क्या होगा, ये कितने बार एंट्री आ रहा है उसकी बार एवरेज होता है। अरे बस सिंपली बनता है। तो तुमने अभी जब तुम यहाँ पे ग्रुप बाय करोगे एम्प्लॉयमेंट नंबर, लेकिन ऑर्डर बाय किस पे करोगे, ऑर्डर बाय करोगे वो सैलरी पे, जो एवरेज सैलरी पे। इस कॉलम का नाम क्या है, सैलरी। इस पे ऑर्डर बाय एवरेज, ठीक है। ऊपर का नाम देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एवरीवन नाउ, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, सब लोग प्लीज एक सेकंड यहाँ पे देखो। दिस क्वेरी आई हैव टेकन फ्रॉम, किसी ने चैट पे रखा है। क्या लगता है ये सही है? जरा एक बार ध्यान से देखो, ये सही नहीं है। कैन यू नोटिस इन द डेटा द ऑर्डर इज नॉट फिक्स। 132 के बाद 138 128 आ रहा है, देख रहे हो? Why? Because you are doing order by salary. तुम्हें एवरेज बाय सैलरी नहीं करना, एवरेज ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी। या फिर एक काम ऐसा करो, ये देखो तुमने कॉलम का नाम एवरेज सैलरी लिया ना, तो इस कॉलम के बेसिस पे ऑर्डर बाय करो। अब देखो ये सही आएगा। एग्जैक्टली वो भी डाल सकते हो। एक सेकंड प्लीज, जब 2 मिनट लोग चुप रहेंगे प्लीज। भाई इधर देख लो, है फिर डिस्कस करते रहना। ये सबको समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज दिस एवरेज सैलरी? इट इज द नेम ऑफ अ कॉलम। ठीक है, सपोज तुम ये नाम नहीं लेते हो, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस थिंग एंड लेट मी पुट इट ओवर हियर। लेट मी से आई डोंट यूज दिस एवरेज सैलरी। ठीक है, देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से राउंड एवरेज सैलरी। ठीक है, आई कैन ग्रुप बाय राउंड एवरेज सैलरी। Okay. Now you notice and for more clarity let me open the Excel sheet. Okay, अब सब लोग प्लीज यहाँ पे देखो। what do we mean? Let's say employment number. Let's say employment number is 111 and 121, then 111, then again let's say 111 and then 121. ठीक है, then I have a salary. Let me take one more number. Let me say 134. So these are the employment number. थोड़ी देर के लिए समझ लो, ये आधार कार्ड नंबर है, सबका अलग अलग है। ठीक है, लेट्स से 111 was having the salary of 100 and 121 was having salary of 120. Then 111 उसका प्रमोशन हो गया, he got salary of let's say, उसको पीनट्स दे दिया, उसको सिर्फ 1 रुपया बढ़ा दिया। ठीक है, फिर से बेचारे का सिर्फ 5 रुपया बढ़ाया। ठीक है, सपोज कर लो। देन 121 इसकी सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 120 टू लेट्स से, इसके साथ कुछ फेवर हो गया, 140 हो गई एंड 134 का एक ही बार एंट्री थी, लेट्स से इट वाज सैलरी वाज 700. फॉर टाइम बीइंग यू कंसीडर दिस डेटा एज योर ओरिजिनल डेटा और द गिवन डेटा. ठीक है, लेट्स से दिस इज योर ओरिजिनल डेटा. नाउ द आउटपुट व्हिच आई वांट, let me say desired output. Desired output, what I want is how many employees I am having. I am having 3 employees. 3 employees हैं, so I want employment number and I want average salary. Average salary.
So employment number is 111, 121, and then 134. What is average salary of 111? Average salary of 111 would be 100 plus 101 plus 105. इनका एवरेज कितना आएगा निकाल के बताओ प्लीज आफ्टर 2 digits after decimal. An average of 121 would be this thing, 120 and 140. So it would be 130. इसका एवरेज कितना आएगा 111 का निकाला किसी ने 306 को 3 से डिवाइड कर दो. आई थिंक 102, राइट? 102 एंड इसका 700. This is the output I want, and then I want to arrange them in the descending order. So जब descending order में arrange करेंगे, then what I'll do is I'll take this thing and then I'll say 134. 700 is the highest value. Then it would be 121. It would be 130, and then 111. It is 102. This is the output I want. अब सबको समझ में आ रहा है कैसा आउटपुट चाहिए और क्या कर रहा है बाय दिस एग्जांपल. ठीक है, अब वापस प्लीज रीराइट करो जिसका गलत हुआ है. ठीक है, अच्छा चेक द लास्ट लाइन. देखो लास्ट लाइन में मैंने कुछ चेंज किया है. ऑर्डर बाय 2 कर दिया मैंने. व्हाट डज दिस 2 मींस? What does this 2 means? Can you notice you are having 2 columns, employment number and round average salary. I want to do the round based upon the second column. तो पूरा कॉलम का नाम लिखने के बजाय कॉलम की पोजीशन दे दी. Okay, round by 2. So it will do the round off based upon the second column. Okay. So basically these 2 queries are doing the same thing, or rather these 3 things are doing the same thing. तीनों please लिखो, practice कर लो for different variations. Because हो सकता है जब तुम रियल लाइफ में किसी और की क्वेरी देखो तो उसने किसी और तरीके से लिखा. ठीक है, all 3 of them are doing the same thing. Please practice.
Done? Okay. अब एक छोटा सा और प्रॉब्लम करो. Get the employee number of the person who is having third highest salary, or third highest, let me say, average salary. Who is having the third highest average salary? So Siddharth is also sending. So many people have sent to this: Siddharth, Sham, Shubham, Karthik, Vedant, Dhruv, Sham. Okay. Which is having third highest average salary? बताओ एम्प्लॉयमेंट नंबर मिला. Get the employment number of the person who is having the third highest average salary. AC भी चल रहा है.
So 2,1. So Siddharth ने जो क्वेरी लिखी, I think that is right. So good one, Siddharth. Now everyone please have a look over here. सब लोग please यहाँ पे देखो. So when I run this command, which is the third highest salary? Third highest salary is 138, right? Now my only thing is I don't want all the entries. I only want this entry. सिर्फ मेरे को ये entry चाहिए. So what I can do, I can directly use the limit function. सिर्फ limit function कर सकते हैं. तो third highest salary कितनी है? एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं. 138,216. So बस इसको कॉपी, ऑलरेडी सब कुछ रखा हुआ था, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे लिमिट लगाना था. लिमिट लेट्स से 2,1. याद आ रहा है ये हमने कल किया है, बट घर में पढ़ा होता तो याद आता. देखो आ गया. कितना टाइम लगाया तुम लोगों ने? So I wanted the third highest salary. Can you notice it is the same third highest salary? ये वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू से पूछे जा सकते हैं. मैक्स एवरेज सैलरी, बट मैक्स एवरेज सैलरी से भी तुम थर्ड हाईएस्ट कैसे ढूंढोगे? मैक्स से तो मैक्स आएगा ना जिसकी सबसे ज्यादा होगी.
मैक्स से कैसे पता चलेगा? मैक्स तो एक नंबर देगा ना, दैट वुड बी हाईएस्ट। बताओ, या फिर तुम लिख के दिखाओ। अगर मैक्स ही चाहिए था तो मैं यहाँ पे मैक्स लगा देता, और मैक्स भी चाहिए होता तो अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए होता तो मैं 1,1 कर देता, पहली एंट्री लेके खत्म कर देता। सर अगर मिनिमम पूछा रहता, मतलब मिनिमम पूछा रहता तो उसको असेंडिंग में करके असेंडिंग में करके सबसे ऊपर वाला रिकॉर्ड उठा लो। अच्छा एक सेकेंड, एवरी सब 2 मिनट प्लीज, यहाँ पे देखो, लेट मी रन दिस क्यूरी। हाँ तुम बताओ इस क्यूरी में क्या हो रहा है, टेल मी द लास्ट वन। आउटपुट इज आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज हैपनिंग इन डिटेल? बताओ नहीं, उसे उसे खुद सोचने दो, डोंट हेल्प हिम। So what could be the aim of the person who is writing this thing? वो क्या चाहता है कि उसने क्वेरी लिखी? फर्स्ट नेम कितने बार आएगा, ठीक है, एंड देन एनीथिंग एल्स? कुछ और किया है उसने? ऑर्डर बाय किया है उसने, ठीक है, ऑर्डर बाय ऑन काउंट फर्स्ट नेम, ठीक है, सो इट इज इन योर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, it is in your ascending order. But do you notice that there are some names which are appearing, let's say, so the lowest count is 185 and then you have something like this. Now I want a problem statement, देखना, get those names and counts of the names which are appearing more than 200 times, ठीक है, let me explain you. So for example, let's say the first word LECH, lech, it is appearing only 185 times, so I don't want this one. Rennie, it is appearing 185 times. Abby 190, all these names I do not want. I want to start from this word, Ishfaq or whatever, from this thing, okay? I want to have only those names which are appearing more than 200 times. Or let's say more than 210 times, थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं। जो 210 बार से ज्यादा आ रहा है सिर्फ वही नाम मेरे को बताओ। पॉसिबल है? क्या लगाओगे? ग्रेटर देन का साइन लगेगा। लिमिट काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है? जिसके दिमाग में आया कि लिमिट लगाऊंगा, गलत आया है। अपने अपने माइंड को रिवर्स करो।
ट्राई करो प्लीज सब लोग, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, खुद अपने से करो। मदद वाला टाइम सबसे आगे बैठा है, हो गया है। इधर क्यों चाहिए?
very few times. Anyone who has done it, जिसको लगता है सही आ गया? I think mostly people would be struggling. Struggle कर रहे हो? क्यों struggle हो रहा है? Struggle इसलिए हो रहा है because एक नया function introduce करना चाह रहा हूँ. अगर struggle नहीं करते और मैं introduce करता तुम बोलते क्यों कर रहा है? Anyone take 5 more minutes and let me know the right answer. Right answer and in right manner, right fashion. So Siddharth is saying select first name, count first name from employees, group by first name, count first name less than 210. Count, why is count less than 210? Why not more than 210? So Siddharth, I am seeing your query. So why it is less than 210? Why not more than 210? Because I want appearing more than 210 times. Okay, let's take it up. अब सब लोग प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है? So what is my requirement? My requirement is I want all those names which are appearing more than 210 times. So I know that people can easily get the count, right? So what I can do is I can say something like this. Let me write it afresh. Screen दिख रहा है? Let me say select first name and then you can say count first name. ठीक है ना? All right. First name and count first name. ठीक है? Now, one thing is obvious that we need to do group by. Because अगर हमें first name का count चाहिए तो हमें group by तो करना ही पड़ेगा. Right? Remember that Excel example? I have to do a group by. ठीक है? Let me give this thing as a, let's say as names count. Okay? I'll use it later on. Or any name which you want to give. I hope people understand that this is just a name. You can give any name. A, B, C, D, F. कुछ भी दे सकते हो तुम लोग, ठीक है? And from employees. यहां तक कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? Select first name, count first name as names count from employees, and then what do I need to do? Where?
हमें एक कंडीशन लगानी है ना, वेयर काउंट इज मोर देन 210 टाइम्स, तो हम एक कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। लेट मी से वेयर नेम्स काउंट is greater than 210, ठीक है। Then what I can do, I can say group by, I will do the group by based upon the first name, group by first name, and then what I can do is I can say, if you want to do order by, then you can do order by your, let's say, whatever, order by your names count or whatever. Do I get any syntax error? क्या कोई error आता हुआ दिखता है? Error आता हुआ नहीं दिखता है. Don't run it, just see this query. Does it make sense? I am saying select first name, count first name as name count from employees where count is more than this. Okay. And then I am doing by group by, and after group by only you can do your order by. Okay. After group by only you can do your order by. इसको जरा रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. एरर आ जाता है. एरर देखो क्या आता है. अननोन कॉलम यहाँ पे तो अच्छा नेम्स ऑर्डर बाय नेम्स काउंट. नेम्स काउंट को अननोन क्यों बोला? ऑर्डर अननोन कॉलम्स नेम काउंट इन योर वेयर क्लॉज बोलता है, ठीक है. व्हाई? बिकॉज प्रॉब्ली ये वेयर जो है वो चल नहीं रहा है. दिस वेयर इज नॉट वर्किंग. और लेट मी से ऑर्डर बाय अगर हम फर्स्ट नेम करना चाहते हैं, वैसे ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी लेट मी टेक अनदर ऑप्शन. क्या अब एरर जाता है? अभी भी नहीं जाता, ठीक है. अननोन कॉलम नेम्स काउंट इन वेयर क्लॉज, ठीक है. Let me change this back. Now, again, let me come back over here. When I see this line, I do not get any syntax error. Syntax error as in जो हमें ऐसा आता है ना, do you notice? ये जो cross आता है ना, ऐसा कुछ cross तो आता हुआ नहीं दिख रहा है. It means syntax wise everything is proper. But when you try to run it, you are getting an error. ठीक है. Why I am getting an error? Because of this where. ये where के लिए error आ रहा है. Do you notice this where I am using on which column? किस column के ऊपर मैं use कर रहा हूँ? I am using this on your count, right? It is nothing but your, I am using it after between your group by and order by. देख रहे हो यहाँ पे group by and order by दोनों आ रहा है. So probably this is the reason that I am getting the error. अगर मैं इसको copy कर लूँ और यहाँ पे एक बार वापस paste करूँ, let me see. Instead of where, let me say having. यहाँ पे having तो नहीं आएगा. Let me count from employees group by. पहले group by कर लेते हैं. Group by let's say first name, ठीक है. Having, अब यहाँ पे लगा देते हैं having names count greater than 210. Now let's see. लिखवा जाता है, ठीक है. Now let's see what is happening. थोड़ी देर के लिए पोर्शन हटा देते हैं. Can I say this portion is clear? कितना क्लियरिटी आता है? Select first name, count first name as name count from employees. Now what I am doing is I am saying group by first name. If I remove this thing, ये भी clear है? Group by first name. Then what I am doing, I am saying havings. Instead of having, if you put where, let's see what happens. Do you notice it is giving you a error? Why? Because this time when I am using the where, I am using the where on the, I will say on your count and not on your actual thing. So over here you would be having your this having function, having names count greater than 210. अब एक बार please run करो. Then again let's explore our having function. ठीक है. So basically having is used with group by. ठीक है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो. Having is used with your group by.
or you can say having is used between group by and order by. ये लाइन हमेशा के लिए याद रखो प्लीज. Having is used between your order by, between your group by and order by. So basically having acts like where when applied to a group by block. देखो ये लास्ट के 3 लाइंस पढ़ो, देखो समझ में आता है. Having is used between your order by, between your group by and order by. देखो having वहीं पे आ रहा है, ठीक है. और if you want you can just say order by also. अगर हमें यहाँ पे जाना, let's say order by names count. Now this will give you more clarity. ठीक है. Order by count this descending. But तुम्हारे यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर आप नहीं किया ये आपका पहले किया था. वो लाइन तो चल ही नहीं सकती, उसके आगे तो क्रॉस लिखा है. एक बार चेक तो कर लिया करो. So guys, again I am repeating, basically having acts like your where when applied to your group by. ठीक है, जब जब तुम group by करोगे तो वहां पे where will not work, havings will work. Run it and see. देखो, don't get confused. Again, I am repeating. एक सेकंड प्लीज सब लोग वापस सुनो. This query is very simple. Only thing is select first name, count first name as name count from employees group by first name. Only thing is instead of have using your where, I am using your having. ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि order by will always come from your after your group by, so no problem over there. You first select the column names and then only you use your from. So from group by, order by, only thing is after, instead of using your where, I am using your having. ठीक है. So whenever you are checking some condition on a block, always use your. And सब लोग प्लीज कल प्रैक्टिस करके आओ, because tomorrow we would be moving into the nested queries. Select के अंदर select. ठीक है, multiple selects we would be using.
लास्ट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो प्लीज सब लोग. रीड इट एंड राइट इट. Just for practice. पहली बात ये unknown column. First, what is this first? First underscore name underscore जब एरर आता है तो एरर और ये वाली चीज तुमसे हटा मैंने सब कुछ सही किया फिर भी गलत है. गलती से कम भी कम करते हैं. ठीक है. अगर उससे पढ़ाया है ना ना मैं वो दूसरा है दूसरे गलती कर दिया. सॉफ्टवेयर की कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे लिए रॉन्ग आंसर देगा. Okay. Select
Yes. लिमिट के लिए तुम अपनी क्वेरी को रखो चैट पे, लेट्स यूज इट। चैट पे पेस्ट करो। सो ये श्याम सिंह की क्वेरी है, लेट्स सी क्या है इनकी क्वेरी। ओके, सो सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट नंबर, round average salary to as average salary from salaries grouped by employment number having average salary greater than 70,000 and order by this thing. So if you notice it is almost similar जो मैंने पहले दिया था, कुछ कुछ वैसा ही है, only thing is salaries के साथ तुम्हें जिससे चेंज करना था और अपना थोड़ा सा लिखना था। So if you run this thing, your order it would be something like this. देख रहे हो? So group by is based upon your employment number. So do you notice all the employees, all the numbers would be once only. कोई भी employment number repeat नहीं होगा. Employment number would not be repeated. Average salary, ठीक है? Having average salary greater than 70,000 and order by average salary. So basically he is doing in ascending order, I think. If you want in descending order, I can say DESC. So now it will give me in descending order. So highest average salary कितना? Let's say पता लगा लीजिए भाई. This is the in descending order. Highest average salary is 1,41,835.
ओके ठीक है गाइस, सो वी विल एंड इट ओवर हियर एंड एक सेकंड प्लीज, सब लोग प्लीज एक सेकंड बात सुनना। जो भी हमने करा है प्लीज उसको प्रैक्टिस करके आओ। whatever we have done, आज तो बहुत सिंपल है। tomorrow we would be entering into the main thing, ठीक है। tomorrow we will enter into the nested queries, एक query के अंदर दूसरी, दूसरी के अंदर तीसरी। so till this time in any query how many times have we used the select statement? select statement सिर्फ एक बार यूज किया, right? tomorrow we would be using more than once in the same query, ठीक है। एक टेबल का रिजल्ट दूसरे टेबल में जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और चैलेंज आएगा। सो वॉट एवर वी हैव प्रैक्टिस, आज घर जाओ और पूरा दिन पढ़ाई करो। दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड द सेशन। थैंक यू फॉर